Prime Minister Narendra Modi had a packed schedule on day 4 of his Japan tour with several political and business engagements. But touching base with the Indian community in Japan was also high on his agenda. He reached the Indian embassy in Tokyo to inaugurate the Vivekanand Cultural Center, where he interacted with children who presented a song in his honor. And when he addressed those gathered, the PM did not forget to stress on his dream of a clean India. इस पर सबसे बड़ा एक काम जो उठाया है और वो है स्वच्छ भारत का। और मैंने देशवासियों के सामने एक बात रखी है कि 2019 महात्मा गांधी के 150वीं जयंती का वर्ष है और महात्मा जी को सबसे प्रिय अगर कोई चीज थी तो सफाई थी। While he was among Indians abroad, Prime Minister Modi dwelled upon the changing image of India. Recalling his Taiwan visit, the PM said that India's advances and advantages in the field of information technology have given a makeover to India in the eyes of the world. तो हम सांप वाले नहीं रहे, हमारा बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम और हल्के फुल्के हो गए। तो बेचारा समझा नहीं। मैंने कहा पहले हम सांप से खेलते थे, अब हम माउस से खेलते हैं। पहले हम और सांप का खेल चलता था, अब हमारा डिवैल्यूएशन डिग्रेडेशन होते होते हम माउस से ऐसे जुड़ गए कि हम माउस को हिलाते हैं, दुनिया पूरी हिलती है। मेरे Prime Minister Modi also touched upon India's secular mold and informed those gathered how he gifted the Bhagavad Gita to Japan's PM Shinzo Abe. But while doing that, he couldn't resist the temptation to take a potshot at his political detractors. आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवद गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर। हमारे सारे सेक्युलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। ये मोदी अपने आप में समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। खैर उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगी। The PM didn't miss any opportunity to reach out to Indians in Japan, explaining to them how they can contribute to boosting India's tourism. मैंने आपसे न येन मांगा है, न पाउंड मांगा है, न डॉलर मांगा है। उसके बावजूद भी आप बहुत कुछ देश की सेवा कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 5 अपने साथी मित्र परिवारों को हिंदुस्तान भेजना शुरू करें। हिंदुस्तान का टूरिज्म दुनिया में कतई पीछे नहीं रहेगा। बड़ी सरलता से करने वाला काम है। Earlier in the day, Prime Minister Modi called upon Japan's Emperor Akihito at the Imperial Palace and held wide-ranging discussions on several issues. Thereafter, he had a series of meetings with leaders of Japanese opposition and other political parties, as well as business leaders. Apart from meeting the oldest living associate of Netaji Subhash Chandra Bose, 99-year-old Saichiro Misumi. The PM also addressed the Indo-Japanese Parliamentary Forum, underlining its significance in the relations between the two countries. ये लीडरशिप की कितनी मैच्योरिटी होगी, दोनों देशों के नीति निर्धारकों की कितनी मैच्योरिटी होगी कि जिसके कारण 110 साल तक ये संबंध और गहरा होता गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक घटना है। The Japan trip revealed another facet of the Prime Minister as a music lover. While he tried his hand at the flute on Monday among school children, the next day he drummed at Brand India and also rang a bell at 2 separate events. The PM's drumming skills came to the fore at the event to launch the TCS Japan Technology and Cultural Academy. He first keenly watched 2 Japanese percussionists perform and then took over from one of them to match the other player beat for beat
for an impromptu jugalbandi that lasted almost a minute. It left all those looking on enthralled. The PM even invited the percussionists to come to India. It seems the PM has made a bid to expand his brand of diplomacy by projecting himself as the representative of a country that has a skill set to match and even beat the world's best. DD News.